where what we are discussing methods of पूरा स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा चिंता नहीं फुल स्टैटिस्टिक्स आपको कभी कभी लगता नहीं टीचर का काम कितना बोरिंग होता है कभी रियलाइज होता है हाउ मच टीचिंग प्रोफेशन इज बोरिंग प्रोफेशन नहीं सर जब अगर बच्चे का मूड पूरा बोरिंग नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज एक ही चीज कितनी बार पढ़ा हो गया so 500 like I hope I have taught this theory more than 1.5 thousand times 1,500 से भी ज्यादा बार मैंने पढ़ा एक theory so here we are going to proceed the things first तो आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी समझने वाली होगी स्टैटिस्टिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टैटिस्टिक्स में कहाँ सा टॉपिक प्रोड्यूस होगा सबको समझ में आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स हैव बेसिकली टू मीनिंग वन इज सिंगुलर मीनिंग in a singular sense of statistics it is considered as stats it is considered as stats and in the plural sense of meaning of plural in a plural sense of statistics plural both right so in a plural sense of गलत लिख दिया था plural sense of the meaning that it is considered as data तो इसी को हम लोग बोलते हैं plural spelling पहले सही लिखी थी ना पहले सही plural sense of the meaning is that is data so in a statistics basically we deals about data and this basically जो statistics को define करते हो data से define करते हैं so on the basis of data concepts we have two types of statistics one is descriptive statistics descriptive statistics means the stats which deals with data जो data से dealing करता हो वो statistics को हम लोग descriptive statistics कहते हैं and the statistics which is not dealing with data that is basically called inferential inferential statistics you can mention that does not deals with stats इसमें statistics से dealing नहीं करते so that is inferential statistics getting my price so we have a two statistics inferential as well as descriptive statistics and in a descriptive statistics as I mentioned data so data have four basic concepts first is data collection first is concept of data collection second data organization is a data organization and then data representation then concept of data analysis so we have a four related to data मैं यहीं पर हूँ नोट डाउन करते चलिए मुरारी बापू के प्रवचन थोड़ी ना सुनो और एक कान से निकाल दोगे we have a four concepts related to data first is data collection second is data organization third is data analysis fourth is data representation and getting so in a UPSC I think UPSC less focus on the topic of descriptive statistics वो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करता so if you don't have a detailed idea about this so it is not
too much difficult point for the civil preparation. ये आपके लिए positive points है इसको ज़्यादा because there will be lot of data, you need a lot of calculations, you need a lot of understanding. Do not need at any point, right? One is hypothesis testing. One is hypothesis testing, and second is basically estimates. So there is a estimates, hypothesis testing, other is estimates. So we have a four basic concepts related to hypothesis. Right now, we have a two basic concepts related to inferential statistics. And while we are going to discuss hypothesis testing, there is the parametric concept. There is a concept of parametric, other is non-parametric. So there is a concept of non-parametric. So in a parametric, initially we study about t-test, which is very important and directly written in your syllabus. And there is also z-test, it is not given in your direct syllabus. Then there is the other concept is ANOVA. ANOVA means analysis of variance, which is very important concept for your exam. Again, in your civil services, and what is different between parametric and non-parametric. Even though I will mention the name of some non-parametric tests, example chi test. Here is the chi test. Second is Mann-Whitney test. Here is a Mann-Whitney test. Other is a Purcell-Wallis test. Purcell-Wallis test. Other is, after understanding of the Purcell-Wallis, there is a other test. Just you can take the example like U-test. U-test is also at there. So we have a different types of non-parametric tests are there. Even though many more like a run test, other is a Friedman test, many more. But as I mentioned, this is not important for civil service. So you should not pay too much attention on this. Your focus should be only there. Ready? So if you want to understand what is about the data collection part, so you can just understand little bit about the data collection. So data collections, basically we have two types of data. One is primary data. One is primary data, other is the secondary data. Even though we have other types of data also, like there is the data of tertiary data, quaternary data is also, and even there is one of the concept big data. Big data is mentioned into Industrial Revolution 4, right? So primary data means the data which is directly collected. So that directly collected data, or it is also called indirect data, means this data is already collected by some agencies, right? This data is already collected by some agencies, so this data is basically indirect data. It is not a direct data. So what about the primary data? Primary data means the data which is collected by observation. I hope I have explained detail about the observation, like participatory observation, formal, informal, etc., etc. So other is interview. By the interview post-traumatic stress disorder, you need to go the patient who is suffering from PTSD, and you can collect the data about the PTSD. Similarly, if you want to take the data of any domestic violence, you want to take any communal violence, like recently, last day you have seen communal violence into the Mewar, that is Haryana. You can also take the interviews to those people. Even you can also do observation. Thousands of the, I think, 100 of crores rupees properties were destroyed by the some protesters. 100 even I cannot say, but maximum 50 crores rupees properties has been destroyed by the communal violence. So there is again a case study. By the case study, you can also collect data, and by the survey you can also collect the data. So survey, case study, observation, interviews, these things we have already discussed. Even in original syllabus of UPSC, you have seen that there is it is mentioned two times. What?
about the study of observation, interview and case study. First, it is as a tools to collection of data. Second, it is a method of research also. So ऑब्जर्वेशन केस स्टडी को मेथड के रूप में भी पढ़ते हैं और डेटा कलेक्शन टूल के रूप में भी इसको हम लोग देखते हैं। मैं कोई दुख है वो समझ में आई? अब डेटा में छुपाता हूँ। बताओ डेटा है हाउ मेनी कॉन्सेप्ट्स? टेल मी द नेम। दिख रहा है क्या? प्राइमरी सेटिंग टर्शियरी concepts. I'm asking how many concepts related to data? How many? 4 concepts related to data. Data collection, data organization, data analysis, data getting Anita Abul. Can you tell me the 2 ways by which you can collect data? Direct and indirect. How you can collect direct data? Like you want to data of Salman Khan, you need to take interview of Salman Khan, or go to his house Galaxy and you can observe the bhaijan, right? So this is not important because we have already done while you are doing methods. So if somebody will ask you how many types of data collection, so you can tell there are basically 2 types of data collection. Getting what? 2 types of data collection. One is direct, other is indirect. And what are the indirect sources of the data collection? Like any NGO's data, any government source data. If you take the data of any government, so that is a direct data collection. And if you are taking the data of just any newspaper, so newspaper is also secondary data. And if you are taking data of just you can take the data, you are taking the data of any ministry's website. Any ministry's website, that is again what type of data? Secondary, because that data has been already collected by someone else. You are just using for your own purpose. That is secondary data. Getting? So I hope you are understanding well about these concepts, so that I am erasing this. मैंने मिटा भी दिया. कोई दिक्कत तो नहीं? Okay. Second point is there, that is data organization. Right? So in a data organization, normally while we collect primary data, right? While we collect primary data, so that data is basically raw data. Raw data means what? Like in a classroom, there is a 30 students. Teacher is asking, tell me your mathematics mark. So suppose first was at 5 marks, second 3 marks, 4 marks, 2 marks, 8 marks, 9 marks, 4 marks, 3 marks, 2 marks, like that out of 10. So this is basically what? There is जो students वो अपना raw data बता रहे. So raw data means the data which is written randomly, that is raw data. But this data need to organize. While we are going to data organize, so that is called series. जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? सीरीज. So while we organize data, we put them into series. Getting my points? So we have how many series? Initially we have 3 series, right? So I'll do here series. See carefully. Series. Initially we have 3 series. First is individual series. Individual series means whenever any specific data is written. That is funny, right? Any specific data is mentioned like 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 like that. So that is what? Individual data. Getting? And what about that next data? That is discrete data. Individual, after that there is a what data? Discrete data. इसके हाथ से पानी लिया है नहीं है क्या? So that is discrete data. Discrete data means whenever NF is written, means whenever numbers and frequency is given, that is like ऊपर जैसे मैंने लिखा whatever is there, any number just like take
2 how many times? 3 times. 3 2 times 4 1 times. So this data is basically regarded as what? Discrete data. जैसे x का मतलब कोई नंबर है, 2 मार्क्स पाने वाले 3 बच्चे, 3 मार्क्स पाने वाले 2 बच्चे and 4 marks पाने वाले 1 बच्चे. So what is here? Here is the x is the number and f is the number of frequencies. So earlier आपने बचपन में शायद किया होगा, बहुत बड़ा ऐसे टेबल दे देते थे टीचर, 30-40 बच्चों का मार्क होता तो फिर उसमें हम कट करते थे और टैली मार्क्स बनाते थे, ऑर्गेनाइज करते थे. So we organize that data into the different types of series. Ready? So after sending of this, there is a third series is what? Continuous series. Continuous series. So here is the continuous series. Continuous series. So what is continuous series? क्या होता है continuous series? Continuous series means whenever x is written into interval, we suppose there is a group will be written. यही नीचे लिखता हूँ group. Will be written and then frequency like 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, to 10, 0 to 5 like two numbers. I hope you have seen this data also. 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 and there is written also its frequencies. तो इसी डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? Continuous data. So we organize data initially in 3 series. First series is what? Individual series, second is discrete series, and third is continuous series. So we organize data into 3 main series: individual, discrete, as well as continuous. So second concept बहुत छोटा था, इसमें से एग्जाम में कुछ भी नहीं आता, इसलिए मैं भी कुछ नहीं ज्यादा बता रहा. हाँ, बट इतना बता देना कि जितना आपको जरूर मालूम होना चाहिए. If somebody will ask you what data, data means any observations which can be written, which can be right. Any observations which can be right, that is data. कोई भी observation जिसको आप लिख सकते हो into the numerical form, that is data. So we have a different types of data. Okay. So the next part for you, that is data analysis. Analysis के बाद फिर representation पढ़ेंगे. So data analysis, fix the heading, data analysis. Ready? So how many types of data analysis? See, data analysis. Data analysis. In a data analysis, basically we have how many concepts? 2. One, data analysis at the level of MCT. MCT means measurement of central tendencies. I hope you have studied in your academics times. तो डेटा का एनालिसिस एक MCT निकालते हैं. MCT means measurement of central tendencies. Other is variabilities. Other is variabilities. So variabilities, it is also called dispersion. तो हम लोग डेटा को डिस्पर्जन लेवल पर भी एनालिसिस करते हैं. In MCT we have a 3 concepts. One is mean, and second is median, third is mood. So mean, median, moods are the 3 important concepts related to what? That is the MCT. MCT related we have a 3 concepts: mean, median, as well as mood. So what is mean? Mean is just average. Mean is what? Average. And what is median? Median is just positional average. A positional average. Positional average is considered as median. And what about the mood? Mood means highest frequency. Highest frequency. Highest frequency. Even it has some advantage and disadvantage.
As I mentioned, this is not important for your exam, so that we are not going in detail. Like we have a different types of median, one different types of mean, and different method of calculation of mean. बचपन में पढ़ा होगा assume mean method, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और एक और पढ़ते थे, बहुत फेमस हुआ करता था, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाएगा? Uh, so we mean basically we can calculate by approximately 10 to 12 methods. 10 से 12 मेथड से भी ज्यादा तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं क्या मीन. But again, it is not important because we are not going to deal in data. Earlier exam of UPSC, in a GS section, around 20 to 30 marks comes directly from statistic portions. तो पुराने जो ऑफिसर्स बन के गए होंगे वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ के गए होंगे. नए वाले ऑफिसर्स को इतना डिटेल में जरूरत नहीं है. लाइक टेबुलेशंस निकालना आता है, इसीलिए आज जब कई बार डीआई के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, उसके पीछे की रीजन है कि आपको डेटा एनालिसिस करना नहीं आता और डेटा का टेबुलेशंस या डेटा रिप्रेजेंटेशंस के कॉन्सेप्ट्स बेसिकली नहीं मालूम. So let's proceed. What we are proceeding? What about the variabilities or dispersions? In that, we will study about the range. So range means क्या होता है? Largest minus smallest. So range means what? Largest minus smallest. And then what is your mean deviation? Mean deviation is also called average deviation. So mean deviation, I hope you have studied in your academics. And then here is what? SD. SD means what? Standard deviation. So standard deviation is there. And there is percentile. Percentile is there. Other is quantile. So quantile. Other is variance. Variance. Percentile, quantile, variance. Even you know standard deviation, which is denoted by sigma. Right? It is denoted by sigma. Sigma is just like O या Q, जो भी आप बनाना चाहें कुछ ऐसा बन गया. I hope you know how to draw sigma. So percentile, quantile, range, variabilities, variance, mean deviation, all these things are basically what? Variabilities. इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? Variabilities. अब इनके कॉन्सेप्ट्स मुझे नहीं लगता आपको जानने की जरूरत है, because there is a mathematical concept for the group data as well as ungroup data. आता है, but about the civil service कुछ भी नहीं आता. हाँ, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ because अभी आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा MPC. What is the full form of MPC? Normal probability curves. So that is important, and there you will understand standard deviation, percentile, T-score, Z-score, etc. etc. तो वेरिएबिलिटी में क्या चीजें पढ़ाई जाती समझ में आ गया. डेटा एनालिसिस में कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी मैंने बता दिया. डेटा एनालिसिस में मीन, मीडियन, मोड. और अगर मीन, मीडियन, मोड में कुछ डाइवर्जेंस होता है, जब तक डाइवर्जेंस नहीं रहेगा तब तक वहां पर हम लोग वेरिएबिलिटीज नहीं कैलकुलेट करते. ठीक है. डाइवर्जेंस मींस कुछ ना कुछ मीन से बात ना बन रही हो. मीडियन से बातें अगर नहीं बनती तो फिर हम लोग क्या निकालना शुरू करते हैं? श्रुति, so what we do? So that is variabilities. Let's proceed. आगे कर लेते हैं हम लोग. Next part, fourth part related to data analysis. क्या क्या पार्ट्स हैं डेटा एनालिसिस से? First is what? First is at there. That is यहाँ लिख लेंगे हम लोग डेटा representations. Data representations. So in a data representations, basically three concepts are there. There is basically three concepts that we need to study and understand. First concept, dispersion also. Dispersion, yeah. So there is a data analysis. Data representation has four concepts. One is graph.
So we represent data on the graph and in the form of tables also. We represent in the form of charts also, right? So in a graph, there is a different types of graphs are there that is used to representing data. Like we have one of the popular bar graph. Our graph is bar graph. Bar graph, then histogram. Histogram. Then what is here? Bar graph, histogram. Then पाई चार्ट चार्ट में आ जाएगा. हाँ, here is a frequency. पढ़ा हुआ आपने कभी? Frequency, polygon, and ogive. I hope you have studied ogive. Got it? नाम नहीं सुना कभी ogive? बताया नहीं है. Here is the ogive, and then frequency curves. Even in psychology, there is a ROC curves, which is very important for reviews. Reverse operating curves. Receiver operating curves, not reverse. Receiver operating curves, that is related to unit number 5. There is a topic of signal detection theory. उसमें ROC का concept use होता है. Receiver operating curves. कभी सुना है? साइकोफिजिक्स का पार्ट है सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी. Can we proceed? Okay. So here is just a table. First understand bar graph. Bar graph basically a discrete data का बनता है. For the discrete data, जैसे आपने simply आप देखे होंगे कि टेबल में x एक्सिस है, this is y एक्सिस, x and y. तो इन टेबल्स के ऊपर ऐसे खंबे खंबे खड़े होते हैं. I hope you have seen टावर A, टावर B. हम बचपन में से कहते थे टावर C, टावर D. क्या नहीं किया वो? हाँ? मजाक कर रहे? Suppose there is a dieting of Anita. First day इन्होंने 500 चपाती खा ली. Tuesday को इन्होंने 500 से थोड़ा सा कम 400 चपाती खा लिया. Wednesday, so here is A for Monday, B for Tuesday, C for Wednesday. Wednesday को भूख कम लगी तो इन्होंने सिर्फ 200 चपाती खाया. Then on the which day? Thursday, she's again increasing her diet. तो ये क्या अनीता का diet. So that is what इसी को हम लोग बोलते हैं bar graph, and bar graph mainly for discrete data. It is mainly for discrete data. And next is एक और आपने देखा होगा हिस्टोग्राम. इन हिस्टोग्राम बस ऐसे कॉन्सेप्ट समझ लो क्या कोई होता है बस वो मालूम होना चाहिए. इन हिस्टोग्राम व्हाट इज देयर. तो हिस्टोग्राम में एक चीज होती है जब एक से दूसरे कनेक्टेड होते हैं. हैव यू सीन? ऐसे कभी कभी आपने देखा होगा एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से चिपकी होगी. So that is what it is basically x and this is y. So this is about histogram, right? And this is for the continuous data. Histogram कभी भी individual data discrete का नहीं बनाया जा सकता. It is drawn mainly for continuous data. Continuous data means this is suppose 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30, 30 के बाद 35 है. तो इस तरह का बनता है. तो वो एक दूसरे 0 से 5 के बीच में कोई नंबर होगा. So that is this data a continuous series of the data. तो ये यही तो दिमाग लगाना है. Then frequency polygon is there.
Frequency polygon, can you draw it here, right? In a frequency polygon, frequency polygon. So in a frequency polygon, first thing is there is the X and there is a Y, and you have seen there is a sometime king. क्या बोलते हैं इसको? King. Have you seen or not? एक king बना होता है. Normally like this, ऐसे king होता है. Like this is a king. So there is a king, and you have seen these graphs sometime like that, like this. But each of them are connected their tops. सबके top ऐसे connected होते हैं. Have you seen or not? Like that. तो इसमें बाकी रेस कर दिया जाता है. आपने देखा होगा ना कि जो टॉप टॉप कनेक्टेड होते हैं. So that is basically frequency polygon. Each one top is connected. जी? हाँ, it is 100%. It is basically for continuous data. It is basically for continuous data, not possible for any discrete or any other form of data. Got it or not? Next part for you, that is the ogive. It is what? Ogive. I hope you have seen sometime cricket match. Have you seen cricket match or not? कभी नहीं देखा. Like there are two teams. Here is the team A. Like suppose team A's score is like this. This is the team A score. ऐसे होता ना क्रिकेट मैच पहला ओवर like that. So other cricket player, other team is like this. This is B. Okay. So while we are comparing the data of two or more on like this steady medi line, even we can also use other ogives also, that is C also. And in your CSAT, ये सारे ग्राफ बहुत important. If you know all these graph quickly, you can identify अच्छा इसका डेटा ये होगा. Sometimes इसको connect कर देता है with the your tables also. It also connected sometimes charts also. पेपर उठा के देखना. अब मुझे CSAT का टीचर बनाया जाए तो शायद मैं बता सकता हूँ. But I am very poor in mathematics. I can explain only graph, कौन से किस टाइप के ग्राफ्स आते हैं और कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं. But the level of questions is not possible to set by me because I am not mathematician. So here is the what? Ogive. After understanding of ogive, there is a frequency curves. It is what? Frequency curves. Frequency curves like there you will see. You have seen sometimes like this is central line and some line is deviated like this, or maybe some line deviated like this. So that is basically frequency curve. So divergence in the line, and even this curve is also possible like this, and sometimes this curve is like this also. Depending on positive and negativeness. So this is a basically frequency curves which we use to draw. ये थोड़ी सी बातें मैंने आपको बताई, जानबूझ करके बताई, जिससे कि आप समझ पाए क्या इम्पोर्टेंट है. Ogives is possible mainly in continuous data. डिस्क्रीट में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है. ऐसा कई ग्राफ ऐसे जो एक से ज्यादा डेटा मिल रहे हैं. Ogive is possible into discrete as well as continuous. Frequency curves mainly it is into the discrete.
Mainly it is in discrete data. So this is the way how to represent data. समझ में आए? क्लियर हुआ? 4 पॉइंट मैंने बताए. कौन सी स्टैटिस्टिक्स की बातें बताई? डिस्क्रिप्टिव, which is also called quantitative statistics. कई बुक्स में quantitative statistics लिखा होगा, तो ऊपर ही लिख देना. Descriptive also is called quantitative statistics. It is also called quantitative statistics, whereas qualitative statistics and quantitative statistics. Get it? Qualitative statistics is all about inferential statistics, right? आगे प्रोसीड कर लें. तो अब मैं बताओ डेटा के सीरीज कितने होते हैं? डेटा सीरीज भूल गया, कुछ याद रहा कुछ भूल गया. How many series are in data? Anita cheating मार रही है. Shruti, how many series in data? How many series are there? हाँ. Individual, discrete. How many types of graph? Yes. Right, Shruti, you are right. How many types of graph are there? बेटा सब मिटा देता हूँ फिर बता. हाँ बोलो मैं. How many types of graph? 5 types. Tell me their names. Bar graph, histograph, frequency curve. Very good. Mosaic. Frequency polygon. Getting? So here is next thing is table. How to table? Table में आप जानते हो it is very important. Like here I am writing achievements of DU student. Achievements of DU student. तो ऊपर जो सबसे ऊपर लिखा होगा उसी को हेड नोट्स कहते हैं. First thing is head notes. Head notes means whatever is written at the top, that is head notes. यदि जिसे हेडिंग बनी होती है ना उसी को क्या बोलते हैं? हेड नोट्स. And if sources is written at there, so footnotes is there. बराबर नहीं बराबर? Head notes, footnotes, and there is what? There is a basically year. So head notes, footnotes, year, and you know this is what? Columns. Suppose here is a student of BA. BA first year, BA second year, and BA third year. So just like I can take the male या boys or girls also. So this is what? Tabulations. So in the tables there is a rows of the table and column of the tables. Right? But अब अभी आता नहीं, पहले इस पे क्वेश्चंस आते थे. Like in a school there is a 500 students, and if there is 200 boy, right? This is the total, and again here is a total GT. We call them total. And here is boy, just like 100
and here is just like total in a beam is just like 150. बना सकते हो? अब बताओ गल कितने होंगे? 50. So similarly, if here is given data, just like 25 and 35. So how much will be total girls? हाँ? गलत हो गया ना थोड़ा सा? कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हो गई। चलो आप बताओ, आप बताओ कितना है? गर्ल्स का डेटा बोलो। सो पहले तो आप टोटल बॉयज 200 है, 500 टोटल है, तो ऑलमोस्ट गर्ल कितने हो गए फिर? 300 हो गए। और 50 यहाँ निकल के आ गई थी। अब इधर गर्ल कितना भी है सेकंड ईयर में कितना हो? 200 15 15 18. So similarly, if there is just like this is tabulation. अब थोड़ा मेरे स्टैटिस्टिक्स गलत हो सकता है क्योंकि मैंने चेक नहीं किया एग्जैक्टली डेटा पहले सोच नहीं रखा हुआ है, तो इसमें जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट आता है। If your data is not coming exactly, it means your calculation is fault. With the help of few data, you will generate other data. जैसे यहाँ पर boys total number is given and total of the students given, so definitely we can produce girl data. And with the help of girl data, BA part 1 and the total and BA part 3, we can generate the BA part 2 data. So this is basically tabulations. Tabulation is the techniques by which we calculate the data or we represent data, और tabulation तो सबसे simple है, like intelligence scores are written into tabulation form, and many of the human beings can be quantified and that can be represented into the tabulations. And then last one is chart. Last one is what? Chart is there. So chart always created their pie chart. Here is what? Pie chart. So in a pie chart, there we have seen that we need to see few things, like there is a pie chart. In a pie chart, few data may be written into degrees. Degrees की maximum values कितनी हो सकती है? 360. And sometimes this data may be represented into percentage. Percentage like 100%. Sometimes this data may be represented into the particular numbers also. So with the help of these data, we just like you can see, this is a degree of food 60. Food degree is there. 105. Education is there, and just like there is mentioned like 45. This is for your rent. किसी का डेटा ऐसे लिखा है कि कोई फूड पे अपना 60 डिग्री खर्च कर लेता है, एजुकेशन 205 डिग्री खर्च कर लेता है, और बाकी जो अदर एक्सपेंडिचर्स में कितना डिग्री बचा हुआ? 105. जस्ट कैलकुलेट देयर, कितना बचेगा? 360 में से माइनस करो 100. इसको थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ेगा, like 170. So just like it is approximately 85.
So this is a way by which अब उसका मान लो टोटल उसकी इनकम 10,000 रुपए, consider the total income is 10,000, अब उसको कन्वर्ट करो. So degrees would be converted into percentage or converted into exact numbers. So this is the basically concept which we used into your academics. क्या होगा ना शायद ये सब प्रैक्टिस बचपन में कराए जाते थे ना कि उसके इनकम इतनी है, राम ने श्याम को दे दिया, श्याम को सीता को दे दिया, बताओ उसकी इनकम कितनी. So what is that? What was that? That was basically पाई चार्ट. सो ये रिप्रेजेंटेशन टेक्निक कहां पर यूज होती है? हाँ यार, वो तो नहीं, तो बोलता नहीं, एक ही लाइन बोलता रहूंगा बार बार. This is used mainly into quantitative research, right? This techniques used into quantitative research. Right now we need to see other research, that is other statistics, that is basically qualitative research or inferential statistics. So we need to understand here about qualitative or inferential statistics. क्या क्या पढ़ते देखें, उसको समझ पा रहा है ना? और नहीं था चार्ट को कितने फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3, डिग्री, परसेंटेज एंड नंबर्स. Okay man, so how many types of data? 2, primary and secondary. Okay, now we will proceed about inferential statistics. Inferential statistics. So we will proceed here about the inferential statistics. Inferential statistics. So here is inferential statistics. Inferential statistics have 4 to 5 concepts that we need to understand. First concept is what? That we study sampling. We will study about sampling. Then second, we will understand about hypothesis testing. We will understand about hypothesis testing. After understanding of the hypothesis testing, नहीं, hypothesis testing डायरेक्ट करना अच्छा नहीं है. We will understand NPC. Then hypothesis testing. Hypothesis है बेटी. NPC is just a data representation. जैसे पहले हम लोग क्वांटिटी में कैसे डेटा रिप्रेजेंट करते थे? by the tables, by graph, by chart. But क्वालिटेटिव डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? नहीं पता. I'll write here normal probability. इसी तो मैंने बोला नहीं पता. Probability नहीं समझ में आया क्या बोला था? Normal probability curve. So once NPC has been asked by UPSC, right? It was asked by UPSC. Hypothesis testing. Then we will understand different analysis.
Like first analysis is correlation. First analysis is what? Correlations. Second analysis is what? A regression. Third analysis is what? Factor analysis. So factor analysis. So these things are there. And in a hypothesis testing, as I mentioned, there is a parametric. बार-बार लिखो. यूपीएससी just बार-बार लिखो. And next is non-parametric. In a parametric, we will understand t-test, z-test, as well as ANOVA. T-test, z-test, as well as ANOVA. And what about the NPCs? What about the, ये तो आता नहीं, मैंने बोला पहले काटना. So इतनी चीजों को हमें पढ़ना है into inferential statistics. समझ में आई ना बातें? है ना सिंपल, मजेदार, इंटरेस्टिंग भी, समझ में आना चाहिए. जितने के बाद ये यूनिट खत्म हो जाए. हाँ. जितना है. और भी पढ़ना है क्या? कितना दिन से पढ़ रहे, अभी खत्म ही नहीं हो रहा है. अभी और भी पढ़ना है. ये बेटे टाइम लगेगा. आज 3 दिन हो गए. मैंने बोला था कि एटलीस्ट अगला वीक चला जाएगा. मींस इस सैटरडे तक आपका ही खत्म. बिकॉज हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं. सो प्रैक्टिस देम. लाइक श्रुति, देयर इज जो बुक है बेटे, व्हिच इज आई थिंक अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बाहर भी तो देता होगा ना. तो ऑल इंडिया लेवल का डिलीवरी कर नहीं करते, या मेट्रो सिटीज में ऑल इंडिया करते हैं. ओके, सो बिकॉज सो टेक द बुक्स आल्सो एंड जस्ट यूज दैट. उसमें स्टैटिस्टिक्स के अब तक जितने क्वेश्चंस हैं सब हमने सेपरेट कर दिया. मींस जो नई वाली बुक आई हुई है ना, उस बुक्स में स्टैटिस्टिक्स के सारे क्वेश्चन इकट्ठा लिख दिए. ये एडवांटेज. मींस अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ लिया और उसके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, सो यू कैन से आई एम अ किंग कॉन्ग, बिकॉज यू हैव अ कॉन्फिडेंस ओवर ऑल द पीवाईक्यूज. एंड वन थिंग, जब आप अप्रोच क्लास पढ़ेंगे तो देयर वी विल डिस्कस इन अप्रोच क्लासेस की में थोड़ी सी बातें मैं भी बता दूं. इन रिसर्च क्वेश्चंस आर नॉट टू मच टेक्निकल. There is a direct questions like what is ANOVA, what are assumptions of ANOVA. So directly it comes. कोई घुमा फिरा के टेढ़ा मेढ़ा कभी नहीं है. एक भी क्वेश्चंस आप नहीं दिखा पाओगे जो टेढ़े मेढ़े हैं, जैसे कि कभी कभी वो किसी रिसर्च एग्जाम में आता है. Like if you are going to prepare any research like MPhil and PhD, so in that case there is a chances to ask some technical tera mera questions, but at here no tera mera questions are. So let's proceed. First thing, that is, so what we are going to discuss, sampling. First of all, we will understand meaning of sampling. We will understand meaning of sampling, and then we will understand feature of sampling. So feature of sampling की कुछ खास बातें ध्यान में रखनी होती है. And then we will understand types of sampling. Types of sampling, and then very important concept is errors in sampling. Errors in sampling. And in types we will study two: probability sampling, probability sampling, and second is what? Non-probability
non-probability sampling. In a probability sampling, you will understand details about random sampling. Then we will study about stratified sampling. Then cluster sampling and systematic also. Systematic sampling अभी समझेंगे. अभी तो हमने भी नहीं बताया सैंपलिंग आता कहां से. जैसे ही पॉपुलेशन नाम लेंगे वहां से ही स्टैटिस्टिक्स प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन में क्या होता है, डेटा, एंड डेटा को ही प्लूरल सेंस में क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स. रेडी? सो हियर इज सिस्टमैटिक सैंपलिंग. किसी बुक में सिस्टमैटिक सैंपलिंग को नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट लिखा है. So but it is part of probability. Here is some other sampling like quota sampling and convenience sampling. Convenience sampling. Other is purposive sampling and accidental sampling. Accidental sampling. So we have a quota, convenience, purposive, accidental are different ways of sampling. अलग अलग टाइप की सैम्पलिंग्स हैं, हम लोग आगे डील करें और इसके एरर्स भी पकड़ेंगे. व्हाट ऑफ एरर देयर. पढ़ना पसंद करोगे ना इसको? हाँ रखिए. नहीं करोगे तो भी पढ़ाऊंगा. पूछ के बताओ, मैं भी तो. हाँ बट एक थोड़ा सा माइंड को रेस्ट दो, 2 से 3 मिनट, फिर नया टॉपिक. एक टॉपिक डिटेल करा. रेस्ट योर माइंड. अगर टेक्निकल नहीं हो तो कन्वीनियंस सैंपलिंग के नाम, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के नाम बताओ अनीता. तो दिख रहा है, आंखें बंद करके बोलो. हाँ बताओ. मैं देख के नहीं बता. देख तो लिया है, सर वो क्या लिखा हुआ है, वो प्रोबेबिलिटी के चेस प्रोबेबिलिटी के ऊपर रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर सैंपलिंग. तो क्लस्टर मींस बंच. Cluster means bunch. Interesting. Overall अगर आप देखें, अब अनीता बिना देखे बता दो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के नाम. प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मीन पढ़ते क्या हो? क्लास में सारी चीजें भूल जाते हैं, फिर पढ़ते कब? पढ़ते कब हो? क्लास में टीचर 2 मिनट पहले बोला होगा, फिर भूल गए. उसके नाम भी भूल गए. सर आप जानते हो पहले से ये सब चीजें ना. एक्चुअली मुझे पता है ना कि ये नए नाम. These are the new names and usually students are unaware about all these. So उसको बड़ा मुश्किल लगता है कि वो अरे ये कहाँ से हुआ, फिर वो कंफ्यूज होता है. क्या है, कैसे है. ठीक है, खैर हम उतना तकलीफ आपको नहीं देंगे. आप ये भी बताएं, मेमोरी में जाता ही नहीं है कोई भी. हाँ, ये न्यू वर्ड्स इतनी जल्दी हमारा मेमोरी एक्सेप्ट करता ही, राइट? या टीचर्स की यही ब्यूटी, मतलब बोलने का मौका मुझे मिल गया. टीचर्स को पता है इस बच्चे को क्या नहीं मालूम होगा, वही पूछता है वो. तो जानबूझ के पूछता है
कि इसको मालूम है कि ये पूछूंगा तो बता देगा, ये वाला पूछता यही नहीं बता पाएगा, यही पूछता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर देयर, बहुत खूबसूरत चीजें हैं। लेट्स प्रोसीड। फर्स्ट इज पॉपुलेशन। फर्स्ट क्या डिफाइन करोगे, व्हाट इज पॉपुलेशन? इतनी गर्मी हो रही है ना, आपको वहां थोड़ा बहुत राहत भी हो रहा है, यहाँ बहुत ही खराब है। मैंने पढ़ा अपनी तरफ घुमा, हम लोग सच में एडिक्टेड हो गए। इतनी गर्मी ऐसे लग रहा है नहा के होगा। Right now, population. Population is the number of any, the total number of any variables. Total numbers of any variables, or you can say variables. Total number of any variables or variables. आपको ग्रुप में कोई इसका नोट्स मैंने शेयर किया हुआ क्या, सैम्पलिंग का है? ग्रुप में है, चेक कर लो एक बार। सो मैं इसको नोट्स शेयर कर देता हूँ। है तो बहुत सिंपल चीज है, बट एक बार पढ़ भी सकते हो आप अपने आप से। सो सी, total number of variants, like there is a total number of variants, so this is a population. Just like you can take the example, this is the number of total cancer patients. Just I will take the example of cancer patients. So cancer patient is just the total population. So population is the total number of variants, and like there is I will take that this is the anxiety data, data of anxiety. So this number of anxiety patients is there. It is with the total number of variables. Total कितने numbers है, that is. अब just imagine करो कि ऐसे डिप्रेशन का डेटा ले लिया हमने, और you can say depression. So I will take the data of depression. So this is again what? This is again what? Population. But just imagine कि पूरे भारत में अगर 4 करोड़ पॉपुलेशन है किसकी, डिप्रेशन पेशेंट की, being a researcher we cannot study all the peoples who are suffering from depression. So depression के कुछ लोगों को, suppose हमने यहाँ से A पर्सन को निकाल लिया for the study A, and यहाँ से B था, हमने B को withdraw कर लिया for the study, and हमने ऐसे यहाँ से C को ले लिया और D को ले लिया. So these are the basically what, ये जो हमने लिए, these peoples are basically what, sample. इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, sample. And the way how we are selecting these peoples, इनको कैसे हमने select किया, इसी को हम लोग बोलते हैं sampling. So sampling is basically a techniques how to collect the samples from the any population. The techniques है. Just imagine कि आपके सामने क्लास में 100 बच्चे हैं और आपने किसी 5 बच्चे को खड़ा करा करके पूछ लिया कि आप पर्टिकुलर टॉपिक को बताइए. सो उस 5 बच्चों के फीडबैक के बेस पे आप बोल सकते हो कि मैंने पूरी पॉपुलेशन को क्या समझाया या क्या नहीं समझाया. यू कैन कलेक्ट दैट डेटा, और मिस जो सैम्पलिंग यानी जो सैंपल का बिहेवियर होगा
वही बिहेवियर किसका माना जाएगा, पॉपुलेशन का। मीन्स वॉट एवर द परफॉर्मेंस गिवन बाय द सैंपल, दैट परफॉर्मेंस विल बी एक्सेप्टेड फॉर द पॉपुलेशन ऑल्सो। तो पॉपुलेशन के लिए भी वही चीजें मानी जाएगी, राइट। सो सैम्पलिंग इज अ टेक्निक्स एंड सैंपल्स आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एनी पॉपुलेशन। तो आप लिख लो, पहले सैंपल लिखो। Samples are representatives of any population. They were selected for the research studies. खैर घर में मम्मी भी कई बार बोलती है कि तुम बहुत बड़े नमूने हो, बोलते हैं ना कई बार में, हमसे कोई शरारती हो जाए, गलतियां हो जाए, so usually our parents said कि you are being sample, तो भी एक अपने आप में मास्टरपीस हो, नमूने। खैर वो उनका राइट बनता है, वो कह सकते हैं। So sample, and then what is sampling? So sampling is a technique. Sampling is a technique to select some people. So select some variables, not peoples. Select some variables for the research purpose. So underline the word techniques. Underline the words techniques. So sampling is a techniques where we select some people. Election नहीं कराया हमने, क्या कराया, selection कराया। Why selection? Because it is based on the researcher choice. There is no election. में जा रहे हो तो यहाँ पर चॉइस है यूपीएससी वालों की, आपको ले या ना ले, डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। सो देयर इज नो एनी वोटिंग सिस्टम। नहीं तो फिर तो हम लोग रोज बोलते हैं नेता जिंदाबाद जिंदाबाद, बिकॉज इलेक्शन होता ना फिर तो, लाइक इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम देयर इज इलेक्शन सिस्टम, बट आई इज फॉर द सिलेक्शन। इलेक्शन और सिलेक्शन का फायदा पता है क्या है? इलेक्शन में अगर ठोकर लगी तो फिर आप दोबारा पार्टी से बाहर या इलेक्शन से बाहर। अगर पुश किसी ने कर दिया, धक्का मार दिया, जैसे क्राउड में धक्के मारते हैं किसी को, तो पर्सन क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाएगा। बट इन केस ऑफ सिलेक्शन, अगर पीछे से धक्का मारा किसी जूनियर ने, तो आप प्रमोट होके क्या बन जाओगे, सीनियर। तो इलेक्शन के धक्के का फायदा ये है कि आप बाहर हो जाओगे। जैसे कोई पार्टी पहले चुनाव खूब जीतती थी, अभी वो उसका 40-50 एमपी सिर्फ इंडिया में, because of election. So elections have power, but there is immediate and quick power, but selection have power, again hidden power or indirect power. So let's proceed. So हमने सैम्पलिंग क्या किया, सेलेक्ट किया, सिलेक्शन किया, इलेक्शन नहीं कराया। That is depending on our choice. अब एक अच्छी सैम्पलिंग की क्या पहचान होनी चाहिए, बताओ मैं, आप अकॉर्डिंग कैसी सैम्पलिंग अच्छी माने, राइट? तो आप यहाँ लिख देना characteristics of good sampling या good sample या good sampling लिखो। गुड सैम्पलिंग, एक अच्छी सैम्पलिंग की क्या पहचान? नंबर 1, राइट, it should be random. Why random? It should be random. वो रैंडम होनी चाहिए। क्यों रैंडम होनी चाहिए? Yes, because it randomizations reduce biasness. Like in our country, many election and selection is based on randomizations. Like into UPSC, anyone can become IAS who is just graduates, maybe from mechanical engineers, electronic engineers, doctors, BA, BSc, BCom, whatever he has done. सबको यूपीएससी कहता आओ हम आपको ऑफिसर बनने का मौका देते हैं। पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम के बच्चे को हम ज्यादा लेंगे। So random means whenever equality is there.
You can say it is democratic method when equal chance to be selection for the each and everyone. So that is random. तो रेंडमाइजेशन होगा उसको अच्छा माना जाएगा. फर्स्ट पॉइंट अच्छे सैंपल की पहचान. सेकंड इज रिप्रेजेंटिंग पॉपुलेशन. जिनको आपने रिप्रेजेंटिंग पॉपुलेशन आपने जिसको भी सेलेक्ट किया है वो क्या करना चाहिए, अपनी पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. They must be representative of the population, means they represent their entire populations. Representative of the populations. Got it? A representative of the population should be there. Suresh is also in the class. Hey, Ayush. Okay, sorry. Ayush says hello. Representing the population. If any sample is representing population, it is good. And then free of bias. फ्री ऑफ बाइस. अगर आप किसी भी तरह का बाइस आप बाइस फ्री टेक्निक्स या बाइस फ्री आप जस्ट यू आर डूइंग sampling, then it is also a good sampling, right? If you are doing your sampling which is bias free, so that is a basically good sampling, right? And then next is standard techniques. Standard techniques. Standard techniques are applied. Means इसमें अच्छी टेक्निक्स का अप्लाई किया जाना चाहिए. So then it is a good sampling. If you are applying standard techniques, so that is good, right? Next is there. Four characteristics is important for a good sample. चार बहुत है, right? Bias free हो, हाँ, population को represent कर रहा हो और इस तरह से रेंडमाइजेशन करें जिससे कि सबको इक्वली चांसेस ऑफ पार्टिसिपेट करने का, तो उसको एक अच्छी टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग कहा जाता है, राइट? देन नेक्स्ट पार्ट इज फीचर्स. यू विल टेक फीचर्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सैंपलिंग को ही तो मैं कहना चाह रहा था. यहाँ सैंपलिंग का कोई फीचर नहीं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सैंपलिंग. This is types of sampling. Types of sampling. Here is first types of sampling is probability sampling. Probability. Initially, you must understand what is difference between probability and non-probability. Probability sampling as well as non-probability. Non-probability. Probability sampling means where you can create assumptions. Why you can create assumptions? Because the population is almost known. तो इसमें population पता होती है, population पता है, and standard parameters are there. Whatever samples will be selected, that is based on standard parameters. And here is high randomizations. High randomizations is there. High randomizations and randomized होता है, and randomized. So there is
highly randomized and randomization is there, so that is हाँ randomizations randomized और दोनों में फर्क है बेटे. Randomizations is a techniques and randomized means equality, you can say, based on equal chances, right? And just here is you cannot create assumptions. Reason being, no populations ideas. आपको populations का कुछ भी पता होता नहीं तो फिर आप कैसे करोगे? Then there is no statistical standard parameters. Again, no standard parameters. It is basically for the convenience, or you can say it is depending on conditions, or it is conditional. तो ये conditional है, depending on situation के ऊपर depend करता है कि किस तरह का आप यहाँ पर samples लेंगे और sampling हो पाएगी. समझ वाली बात है, हल्की फुल्की आ रही. अब तक तो मैं डेली पानी पी गया फिगर में लगे. खैर सर ये मेथड ऑफ रिसर्च में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? सैम्पलिंग कोई मेथड थोड़ी ना है, ये तो डेटा कलेक्शन करने के लिए टेक्निक्स है, सैंपल से ही लेते हैं. देखो जैसे मेथड का मतलब होगा किस तरह से हम लोग कौन सी टेक्निक लगाएंगे स्टडी करने. हमने सोचा चलो हम एक्सपेरिमेंट करें. एग्जांपल बंडूरा का तो नाम सुना होगा आपने. तो बंडूरा ने कहा कि मुझे क्या करना है, ऑब्जर्वेशनल, लेकिन उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना. अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए बंडूरा ने क्या किया, 72 पीपल को लिया. एक में कितना हुआ 24, एक ग्रुप में 24 और एक ग्रुप में 24. अब जो 72 लोगों को सेलेक्ट किया, ये क्या थे उसके लिए, सैंपल थे. गेटिंग? अब लेकिन उनके ऊपर वो क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है. कौन सा एक्सपेरिमेंट्स, कंट्रोल्ड लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट. तो पहले वाले एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 एंड सेकंड को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 3 बन. अब आप करें कंट्रोल ग्रुप 3 बनाए. अब आप हमने क्या पढ़ा था रिसर्च मेथड में, इन रिसर्च मेथड देयर इज अ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एज वेल एज कंट्रोल ग्रुप, स्पेशली लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट. तो अब एक ग्रुप को उसने कहा कि चलो टीवी देखो, और उस टीवी में दिखाया गया कि बहुत सारी बॉबो डॉल को बहुत मार पिटाई हो रही है और चीरा फाड़ा जा रहा है. बच्चों ने देखा और टीवी देख करके दूसरे रूम में आके बैठ गए, और वहां पर भी बहुत सारी डॉल रखी. सो दे वर आल्सो टीयरिंग दैट बॉबो डॉल्स, क्योंकि उन्होंने वही चीजें देखी थी, सीखा. अब अच्छा, अब ऐसा किसने, कितने बच्चों ने किया, 24 में से अगर 25 अगर 20 बच्चे कर रहे हैं, इसका मतलब ऑब्जर्वेशन लर्निंग हुआ कि नहीं हुआ. और दूसरे ग्रुप को जो 24 बच्चे थे उनको भी यही कहा गया, ऐसे कि उनको एक टीवी दिखाई गई और टीवी में डॉल को बहुत प्यार से दे वर प्लेइंग वेरी हम्बली विद द डॉल्स, और डॉल को खेलते खेलते मजे करते करते फिर उनको दूसरे कमरे में ले जाके रख दिया, और वहां पर डॉल रखी थी. वो लोग भी डॉल के साथ में क्या करना चाहिए, और अराउंड 80% बच्चे कर रहे थे. तो इसका मतलब क्या, उसका स्टडी करेक्ट है. उसकी स्टडी में क्या निकल के आया कि जो कुछ आप देखोगे वही चीजें सीखोगे, वही करोगे. इफ यू आर वाचिंग वायलेंस, सो यू विल डू वायलेंस. इफ यू आर वाचिंग लव एंड केयर, तो ये कैसे पता चला, वो इस सैंपल से पता. अब उसने सैंपलिंग कैसे किया, उसने क्या किया, ये ज्यादातर 0 से 6 ईयर के बच्चों को लिया. हाउ मेनी इयर्स, क्योंकि 0 to 6 ईयर के बच्चे को कॉपी कैट कहा जाता है.
they are very fast copying the things, right? जैसे मैं if I have seen my son, तो उसको अगर हम लोग कुछ बोलते थे इधर आना तो कहता था इधर आना, right? If say कि you are बेवकूफ तो वो भी कहता था yes you are बेवकूफ. Mainly very frequent into the small child. तीसरे ग्रुप उसने क्या किया, कुछ नहीं करवाया, बस कमरे में ले जाके कोई टीवी चल नहीं रही थी, मस्ती से बैठे थे आधे घंटे, फिर बोला चलो बाहर. तो अब यहाँ क्या हो रहा है बेटे, एक्सपेरिमेंट हो रहा है. किस चीज का एक्सपेरिमेंट हो रहा है? Here is experiment is just about observation learning. अब एक्सपेरिमेंट क्या था, यहाँ मेथड था, और 24 पीपल क्या थे, सैंपल थे. अब उनको अगर हमने रेंडमली ले लिया तो दैट इज सैम्पलिंग टेक्निक्स, राइट? हो सकता है कि एक स्कूल में 500 बच्चे हों, उसी में से हमने 24 ले लिया, तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. रैंडमली हमने ले लिया कि एज क्राइटेरिया सेट कर लिया कि बस दे कैन कम एंड दे कैन बी पार्ट ऑफ आवर सर्विस. सो दैट इज getting. Next is, so there is a difference between probability sampling के एग्जांपल यहाँ लिख दो, नॉन प्रोबेबिलिटी वाले एग्जांपल दूसरे से. So note down the examples of the both samplings below of it. Non-probability sampling, convenience sampling, and anyone as per our choice, जो हम अपनी मर्जी से benefit या अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग हम सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं. सो दैट इज व्हाट sampling, non-probability. इसे हमने कोटा बना दिया. So it is basically not a randomized and democratic manner. जबरदस्ती हमें सबको रिप्रेजेंटेशन देना है, इसलिए हमने सैंपल सेलेक्ट किया. So next is proceed. Let's proceed. First is random sampling. Right? तो अब आप पहला प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का डिटेल लिखना शुरू करो. रैंडम सैंपलिंग, first is random sampling. So random sampling means that sampling techniques where each members have chances to be part of the sample, and it is basically a democratic method. Basically we do lottery method. हम लोग random sampling में कौन सा मेथड यूज करते हैं, लॉटरी. लॉटरी मींस सपोज एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों की हमने वो चिट बना ली, और चिट बनाने के बाद किसी का भी नाम उसमें सैंपल के तौर पे सेलेक्ट हो जाए, दैट इज व्हाट सैंपलिंग, रैंडम. सो लिखो, रैंडम सैंपलिंग मींस, या इट इज अ टेक्निक्स, डायरेक्ट लिखो, इट इज अ टेक्निक्स of sampling equal chances to be part of sample basically lottery method used.
Basically lottery method used. So in this sampling we use what method? Lottery. Anyone can be part of our बन सकता है. This is the advantage of lottery sampling or this sampling. कोई भी बन सकता है. Anyone can be part of it. So this is one of the nice or simplest form of technique. तो आप एक पॉइंट लिख देना. It is most democratic method. It is most democratic method. It is bias free. Equal chances for each participant. Equal chances for the each participant. सबके लिए बराबर चांस है. कोई भी इसका हिस्सा बन सकता है. Example. Lottery you can take the, जैसे कई बार KBC को ले लो आप. The people who submit the form कोई भी उसका हिस्सा बन सकता है. Example KBC. KBC is basically lottery system जिसका कंप्यूटर बाबा ने नाम सेलेक्ट कर लिया, उसको वहां बुला करके वो अलग अलग लेवल पे गेम्स खिला करके उसको ट्राई करते हैं और उसको चेक करते हैं कि दिस मैन इज appropriate or not. So that is a lottery techniques of the sampling. Ready? Next. So लिख लो. Many psychologists example Skinner, Bandura, Cattell has used random sampling. So they used random sampling for their research. अपने रिसर्च के लिए रैंडम सैम्पलिंग किया, and this random sampling was too much beneficial and fruitful, and they use these techniques frequently, right? So it was one of the nice concept used by them, right? And we proceed अगला part, stratified sampling. Next part is stratified sampling. So what is stratified sampling? Next is stratified. As name suggested, strata. As name suggested, strata. Strata means certain eligibility. Means you can be part of the ensemble if you have certain eligibility. Means आप में कुछ स्टेटा रहेगा या एलिजिबिलिटी रहेगी तो आपको हम लोग अपनी रिसर्च का हिस्सा बना लेंगे, अदरवाइज नहीं. एग्जांपल एलिजिबिलिटी नहीं, एलिजिबिलिटी, राइट? सो जस्ट यू हैव सम एलिजिबिलिटी, देन यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट सैंपल. एग्जांपल यू कैन टेक. एग्जांपल जैसे मुझे एंजाइटी के ऊपर रिसर्च करना, और एंजाइटी को मैंने सोचा खराब मेरी स्पेलिंग, एंजाइटी को मुझे अगर रिसर्च करना है और मैंने सोचा कि एक पर्सन जिसकी उम्र 40 ईयर का हो और वो पोस्ट ग्रेजुएट हो, 2 बच्चों का पिता हो और किसी मेट्रो सिटी में रहता हो और उसकी इनकम
ब्ला ब्ला ब्ला। तो हमने क्या क्रिएट कर लिया कि ये स्टेटा है और इस स्टेटा के लोग हमारे रिसर्च का सैंपल बन सकते हैं। सो ओनली दैट स्टेटा क्वालिफाइड पीपल्स विल बी द पार्ट ऑफ आवर रिसर्च। if they are not qualified that स्टेटा then they will be not part of our research. वो हमारे रिसर्च का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। Getting or not? Example. Example, you can take the example of UPSC. UPSC exam can be only given by the some status people, those who are graduates and must have age of 21 year. At least if you will qualify these two strata, so you can be part of civil service exam. Similarly, in India's all posts, भारत के जितने post है, like you want to become a president, so you must have some strata. This should be at least how much year man कितने साल का होना चाहिए? President के लिए, president के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 35 years. और दूसरा स्टेटा क्या होना चाहिए? Citizen of India. Third strata must have experience or the knowledge over the politics of any art, culture and anything. किसी चीज के बारे में अच्छी समझ होनी चाहिए. Then next, other strata. अरे मेंबर बनने की कैपेसिटी रखा हो ना, पढ़े हो कहीं पॉलिटी वगैरह, पढ़ते नहीं पढ़ते हो गया कि नहीं हुआ? सो क्या होना चाहिए? प्रेसिडेंट बनने के लिए उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए एलिजिबल हो, एटलीस्ट उसको, हाँ एमपी, एमएलए नहीं, एमपी बनने के लिए वो बन सकता, वो होना कोई जरूरी नहीं है, बट इतना उसमें एफिशिएंसी हो कि वो जरूरत पड़ने पे एमपी बन जाए। और उसमें भी मिनिमम 100, अभी तो क्राइटेरिया बना दिया कि इतने या कुछ लोगों का सपोर्ट हो, पहले तो नहीं होता था कि आप कुछ लोगों से आप अगर आपको नॉमिनेट करते हैं तो आप इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं तो इससे कोई भी चला जाएगा कि मैं भी प्रेसिडेंट बनने आ गया, राइट? उसमें मेंबर्स नॉमिनेट कर रहे होंगे कि देखो ऐसे बोल सकते हैं, देखो इतने लोग मुझे चाहते हैं, एटलीस्ट वोट की बात तो बात की, these people are nominating me as a member of parliament, so from the parliamentary body, तो मैं इसलिए इसका मेंबर, मैं इसलिए इसमें आ सकता हूँ। नेक्स्ट क्या लिखोगे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में? It is a technique in which samples should have some strata. Underline the word strata. Samples should have some strata to be part of any research. To be part of any research means if you have some strata, then you can be the part of any research, otherwise you will be not the part of any research. Getting my points? Example, if a researcher want to study anxiety, so researcher can select some patients or some people as per the strata, like एज बार, एज का स्टेटा बना देते हैं, लिख लो, लाइक कैन सेलेक्ट सम स्टेटा, एग्जांपल एज बार, एज मींस एज, क्वालिफिकेशन, जेंडर, कोई भी स्टेटा बना दिया जाए। एज, qualification, gender or any economical strata also is possible. So only that peoples can be part of
research, otherwise they cannot be part of research or state. getting? तो समझ में आई ना बातें? सिंपल है, मजेदार भी है, समझने में सिंपल है, इतना ही है। अगला है क्लस्टर सैंपलिंग। सुन लो, समझ लो, सारे समझ लो। क्लस्टर सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग मींस व्हेनेवर अंगूर खाया हुआ आपने, अंगूर का गुच्छा होता है, अंगूर का कभी ऊपर से टेस्ट करके अंगूर ले लिया, पता लगा नीचे क्या निकल आया, खराब, होता कि नहीं होता? सो क्लासरूम में मान लो ऐसे 30 बच्चे बैठे, आगे वाले 2 बच्चों से पूछ लिया क्वेश्चन और बोला कि वाह ये तो सारे, और उन्होंने जवाब भी दे दिया, आपने क्या बोल दिया, दे आर ब्रिलियंट। सो बट पीछे जो बच्चा बैठा वो तो हो सकता है पढ़ने में बेवकूफ हो, या हो सकता हो एवरेज हो, बिलो, अदर में भी ऑल्सो, दूसरे बच्चे भी हो सकते हैं, अदर में भी ऑल्सो, अदर में भी ऑल्सो। सो इन दैट केस द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, नॉट अ प्रॉपर सैंपलिंग। सो रिसर्चर विल सेलेक्ट, एक बच्चे आगे को ले लिया, एक उधर से ले लिया, एक उधर से ले लिया, एक उधर से ले लिया। सो दैट इज व्हाट टाइप ऑफ सैंपलिंग? Cluster sampling. Cluster means whenever we are selecting more than one sample for the same category or from the same groups. So that is cluster sampling. But that is based on some parameters. Example जैसे हमने रोल नंबर 1 को ले लिया, 5 को ले लिया, 10 को ले लिया, ऐसे रोल नंबर वाइज। आई होप कॉपी चेकिंग कभी ऐसे होती है। रोल नंबर 1 को बुला लिया, बोले आप अपनी कॉपी लेके आ जाओ। फिर रोल नंबर 5 को बुला लिया, फिर 5 से 10 को, फिर 10 से 15। So there is some gaps. That gaps may be. So cluster sampling is a techniques where we collect more than one sample, but that sample will be based on some techniques such as code and event, and इस तरह से हम लोग सैंपल को वहां पर सेलेक्ट करते हैं। लिख ही लो, ज्यादा अच्छा है, लिख लो, आप नोट डाउन कर लो। Cluster sampling means, yeah, it means when we select as a sample more than 3-4 people for a research, people की जगह पे variables लिख लो, variables for research from same categories on the basis of some criteria such as, on the basis of some criteria such as old and even or any system, कोई भी सिस्टम बना करके that we select, that is what sampling, we call them cluster sampling. Getting? So cluster sampling हमने कर लिया on the basis of some criteria, on the basis of some parameters. I hope हो गया ना आपके? Next example लिख लो. Example
if a teacher want to check the achievement test, so can select people, yeah, variable, even number, even roll number students, even roll number of students. So that is cluster sampling. One more, that is एक और लिख लो, that is systematic sampling. Some psychologists believe that it is a part of non-probability sampling, but systematic sampling mainly used for probability sampling based on certain procedure, based on certain procedure, example, based on certain procedure, मतलब इसमें अंडरलाइन करो कुछ प्रोसीजर, and that procedure will be set by who? Researcher will set some procedures, on the basis of that वो अपने sampling को, and maybe use some universal procedures also. जैसे universal procedures में ले लिए couples, क्या दिया? उसने बोला कि married, if you are the part of married, then you can be part of this. या ऐसे आपने प्रोसीजर बना लिया कि नहीं, मुझे तो जो मेंस इंटरव्यू क्वालिफाइड होंगे उन्हीं को ट्रेनिंग दिलाएं, कुछ ऐसे सिस्टम बनाए, राइट? सो बेस्ड ऑन सम प्रोसीजर्स दे आर सेलेक्टिंग टू बी पार्ट ऑफ, लाइक कमिटीज. एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल पार्लियामेंट्री कमिटीज. पार्लियामेंट्री कमिटीज कैसे बनाई जाती है जानते हो आप? उसमें जैसे आपको अच्छी साइंस की समझ है तो आप साइंस की पार्लियामेंट्री कमेटी के पार्ट हो. इफ यू हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ओवर द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, so आपको फ्यूल या एनर्जी वाले में आपको कमेटी का मेंबर, स्पीकर, यही होता ना. बट लोग सब सारी कमेटीज में नहीं होता है, कुछ कमेटीज में होता है. हाँ, कुछ में तो विपक्ष अपोजिशन के भी लोग बैठते हैं. तो दैट्स in that committee, तो उसमें कुछ प्रोसीजर क्या है कि हर कोई उसका पार्ट नहीं बन सकता. Only the few people who may have expertise, who may be part of parliamentary system, बहुत सारे उसने सिस्टम के बेस पर उन्होंने बनाया. You can be part of this committee, you can be part of this committee, you can be part of this. So that is again systematic sampling. Systematic sampling we use for the research, for the at the various times or occasions that we use. So thank you. Right. We will do tomorrow non-probability sampling. We will do tomorrow non-probability sampling.